So guys, this is the most sensitive and disturbing video that I have made till now. Whatever I'm going to talk about in this video actually breaks my heart. It makes me extremely sad. Also, this video would be in Hindi cause यार मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वाली वीडियो देखें, ओल्डर जनरेशन्स के लोग भी ये वीडियो देखें ताकि उन्हें पता लगे कि हमारी फैमिलीज में होता क्या है. गाइस, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट टॉक अबाउट थिंग्स. एंड व्हाई? इंडियन कल्चर, फैमिली वैल्यूज, हमारी फैमिलीज में बहुत शर्म और हया है. तो यार आज मैं बताता हूं कि हमारी फैमिलीज में होता क्या है. सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन. सो शी टोल्ड मी दैट व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल, तो उसके मामा उसे छत पे लेके गए, गेट लॉक किया एंड ही ट्राइड टू रेप हर. अब वो तो उसने शोर मचाया एंड लकीली लोग भागते हुए ऊपर आए, गेट तोड़ दिया. बट शी टोल्ड मी कि जितना डर उसे वो उस एक मिनट में लगा था ना, उतना लाइफ में कभी नहीं लगा. गाइस, जस्ट इमेजिन एक 12 साल की बच्ची, आई मीन चिल्ड्रन आर इनोसेंट एंड वल्नरेबल. उसकी फैमिली में ही कोई, मतलब फैमिली विच इज सपोज टू मेक अस फील सेफ एंड प्रोटेक्टेड, अगर कोई रेप अटेम्प्ट कर देता है, देन शी विल बी स्कार्ड फॉर हर लाइफ. If she can't trust people in her own family, then how can I ask her to trust other men? How can I ask her to trust strangers? Just think about it for a second. Now guys, जो अगला incident I would be telling you, when that happened, it actually rocked me. I mean, it was hard. It was extremely difficult. So there was this friend of mine, extremely close. We both were extremely close. सो हम रोज बात करते थे, हमारी बहुत बात होती थी. सडनली वो एक हफ्ते के लिए गायब हो जाती है. सो आई गॉट एक्सट्रीमली एंग्री, आई गॉट एक्सट्रीमली वरिड, क्योंकि यार अगर आप सालों से किसी से रोज बात कर रहे हो एंड सडनली एक हफ्ता कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, सो यू वुड बी वरिड. तो फिर एक हफ्ते बाद वो वापस आई एंड शी साउंडेड एक्सट्रीमली लो. तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, वेयर वर यू? तो शी सेड कि यार कुछ नहीं यार, बस फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, मम्मी ने फोन ले लिया था. अब यार मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही है, बट आई रियलाइज कि कुछ सीरियस हुआ है. तो लेट्स जस्ट चेंज द टॉपिक एंड चीयर हर अप. तो हम बात कर रहे थे, सडनली शी सेड कि यार मैं तुझे एक बात बताऊं. तो मैंने कहा बता यार. तो शी सेड कि यार बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है. सो देयर वाज दिस फैमिली वेडिंग, तो हमारा स्टे वहीं पर था. तो रात को मैं सो रही थी, सडनली आई रियलाइज कि किसी का हाथ मेरी चेस्ट पे है. मैं इतनी डर गई कि पहले तो मैंने सोचा कि आंखें ना खोलूं, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. बट देन मैंने अपनी आंखें खोली, सो आई सॉ कि मेरा एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड मेरी चेस्ट फील कर रहा था और वो मेरे को देख के भाग गया. बट उस टाइम मैं इतना डर गई थी कि मेरी कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हुई, मैं बहुत देर तक तो हिली ही नहीं. अब यार जब उसने मुझे बताया ना, तो आई फेल्ट एक्सट्रीमली सैड, आई फेल्ट डेविस्टेटेड. मतलब मैं उसे बोल तो रहा था कि यार इट्स ओके, कोई बात नहीं, आई वाज ट्राइंग टू बी देयर फॉर हर, बट वो सब बोलने का था, बिकॉज आई वाज हार्ट ब्रोकन. देन शी सेड कि यार तुझे एक और बात बताऊं. मैंने कहा हाँ यार बता. तो शी सेड कि जो इंसिडेंट है ना, ये बहुत पुराना नहीं है, ये इसी हफ्ते का है, और वो जो लड़का था वो मेरा फ्रेंड नहीं, मेरा फर्स्ट कजन था. अब गाइस, ये सुन के ना आई वॉज कंप्लीटली ब्रोकन, आई वॉज शैटर्ड. मतलब यार ये वर्ड्स हम यूज तो बहुत करते हैं, बट फॉर दैट डे आई एक्चुअली मीन इट. आई मीन इट वॉज द मोस्ट हॉरिबल फीलिंग एवर. इट वॉज लाइक रॉक बॉटम. क्योंकि यार हम न्यूज में तो बहुत सुनते हैं ऐसे इंसिडेंट्स कि किसी के साथ कुछ हो गया, एंड आई फील रियली बैड व्हेन आई हियर दोस. बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम when something like that happened to someone who was extremely close to my heart, someone whom I absolutely loved. So it was the worst feeling ever. That was the worst day of my life. And the sad thing is कि यार मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो I can't even imagine कि उसे कैसा लग रहा होगा. Now it happened way back. Thankfully she is over it. She is extremely happy now. She is a happy soul, and that is extremely satisfying for me. But guys, before making this video, I talked to 9 girls, and 6 out of those 9 girls were at some time molested by someone in their family. And I'm talking about good, well-to-do families here. So guys, this is the kind of society we are living in today. I know बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख के कह रहे होंगे कि फक यार ऐसा भी होता है, ऐसा कैसे हो सकता है.
Trust me, even I was shocked when I heard this for the first time. But this happens way more than we can imagine. Kyuki, guys, people don't talk about these things, and I don't blame them. When you have been through such an experience, it is not easy to talk about it. But the only thing that I would tell anybody who has been through such an experience is, guys, talk to someone. Find someone you trust, because when you keep it inside you, you feel extremely lonely. And with such an experience, loneliness is the last thing you need. You need support, you need someone to be there for you. So if you can't find a friend of yours, talk to your parents. I know we feel like we shouldn't tell these things to people who are close to us because they would get worried. But guys, it's okay. Share your pain. Let them be a little worried. You owe it to yourself after what you have been through. And guys, when you go through such a tragic incident together, trust me, it makes your relationship even stronger. Because the friend I was talking about, my close friend, due to some reasons we don't talk today, but there is still immense love and respect between us. She knows that even today, if she calls me even at 3 in the night, I would always be there for her. And that is because she shared something so tragic and personal with me, so it was extremely intimate, and you make a bond which lasts forever. So guys, now please share this video, because the primary reason for making this video is that someone who has been through such an experience comes across this video, and this is somewhat of a therapeutic experience for them. So share it with your friends. Also share it with your family members, share it with your parents, because when I first found out about this, I couldn't believe it. So I'm pretty sure that there are a lot of people who have no idea about this. So let's try and bring a sense of awareness among people. And guys, if you like what I'm trying to do here and the kind of topics I'm talking about, then do subscribe the channel.